हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, होप आपके ट्रेड सही जा रहे हो। आज देख लेते हैं। आज जो फेडरल रिज़र्व जो यूएस की सेंट्रल बैंक है, um, उसके चेयरमैन ने उसके चेयरमैन की आज जो क्वेश्चनिंग हो रही थी बाय द सेनेट बैंकिंग कमिटी, तो उसमें आज क्रिप्टो के बारे में भी बोला गया। सो अगर आपको पता नहीं, फेड चेयरमैन इज़ लाइक, yeah, I mean, he almost moves the market, at least the SPY, SPX, US की markets move when he talks. So his decisions and basically the decisions of the central bank move a lot of things, and especially अभी जो interest rate hikes हो रही हैं, he is the one who is deciding, his committee. So yeah, I mean, he is talking about crypto. That means that yeah, the crypto prices would move. तो प्राइजेस मूव करेंगे तो हमें ज़रूर देखना चाहिए क्या बोल रहा है वो इसके बारे में। एंड जब वो बोल भी रहा था तब भी प्राइजेस रिएक्ट कर रहे थे। मैंने टेलीग्राम पे डाला था उसकी वीडियो, एंड आई वाज शोइंग द प्राइजेस एज वेल। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डू ज्वाइन द ग्रुप। सो इस पर मैंने डाली थी। सो या, प्राइजेस वर मूविंग देन व्हेन ही वाज टॉकिंग। सो अब देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम from the Federal Reserve. Let's see. Before German, we've seen cryptocurrency values collapse by some 2,000, by some $2 trillion, and markets crash over the past few weeks. Consumers losing money, workers losing jobs. The Monetary Policy Report highlighted the risks of stable coins, digital assets that aim to maintain a stable value in order to trade cryptocurrencies. Talk for a moment, if you would, about the financial stability and monetary policy risks that these assets pose, and how are stablecoins different? In your answer, include how stablecoins are different from the U.S. dollar, which has the full faith and credit of the United States behind it. A stable coin is an instrument really that is backed up in it. There's a reserve that has securities in it that are meant to assure the value of that, of let's say it's a dollar stable coin. So it's meant to assure that your interest is actually worth $1. So that sounds a lot like a money market fund, for example. And the way money market funds work is there's great transparency about what's in the reserve and their requirements about what must be in the reserve in order to preserve that $1 value. The world of stable coins is new and emerging, and it doesn't have the sort of fit for purpose regulatory scheme that it needs to. And I think that's something you've been hearing a lot across the board. A number of federal agencies and from our own Treasury Department, which has been leading an effort to try to put in place. And many members of Congress now have proposed new frameworks for regulating stablecoins and digital assets generally, and that seems like a wise thing. And you don't. So अभी तक अगर जैसे हम लाइक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो इट्स मोर अबाउट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्टेबल कॉइन्स जिनकी वैल्यू पेग्ड है यूएस डॉलर से, उनकी रेगुलेशंस के बारे में, स्पेशली आफ्टर द लूना यूएसटी कोलैप्स। दिस इज़ अ हॉट टॉपिक, काफ़ी लोगों ने पैसे लूज़ किए हैं, इंक्लूडिंग मी। सो या, दिस इज़ अ गुड थिंग, एंड इट वुड बी अ गुड एंड अ बैड थिंग। काफ़ी जो स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी जिनके पास एसेट्स नहीं हैं अपने स्टेबल कॉइन को यूएस डॉलर से बैक करने के लिए, सो एक बार रेगुलेशंस आएंगी, सो मे बी दोज प्रोजेक्ट्स गेट वाइप्ड ऑफ, एंड इन्वेस्टर्स के लिए इट वुड बी अ सेफर बेट अगर वो इन स्टेबल कॉइन्स में अपने पैसे रखते हैं। लेट्स सी आगे क्या डिस्कस होता है। Clearly SEC, clearly CFPB, other agencies, the Fed's role in regulation of cryptocurrency, in your mind, is what? Well, that's one of the issues, is who really does have authority over this, and that's something Congress would need to clarify. We have authority over what banks can and can't do. Some banks and bank holding companies. The SEC has some jurisdiction over securities. The CFTC has relevant jurisdiction. So part of this will be sorting out, deciding what these things are and how they should be regulated. There are stable coins that are really used in connection with the crypto trading platforms. That's most of what happens now with stable coins, but there are also some stable coins and even more potentially that will be used in payments broadly. So that would be two different kinds of regulation there. It's just an area where Congress and Congress is investing
bandwidth and looking at proposals and something like, and that's I think a healthy process that should lead over time to something that has bipartisan support and puts in place appropriate regulation for the whole area. Let me drill down. So अभी तक ये जो बोल रहे हैं बेसिकली कांग्रेस उनकी पार्लियामेंट है, सो इट्स स्टिल नॉट क्लियर कौन क्रिप्टो करेंसीज को ओवरसी करेगा. एसईसी करेगा, एसईसी उनकी सिक्योरिटीज़ कमीशन है यूएस की, या फिर फेडरल रिजर्व करेगा और एक और एजेंसी जिसका नाम लिया है जो अदर सिक्योरिटीज़ हैंडल करती है. सो इट्स स्टिल नॉट क्लियर कौन करेगा, बट श्योरली वी कैन एक्सपेक्ट सम रेगुलेशन बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन दैट जो इनकी पार्लियामेंट है वो काम कर रही है उस पर, एंड किसी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर आएगी कि इनको रेगुलेट कैसे करें, इनके ऊपर रूल्स बनाए क्रिप्टो करेंसीज पे. सो या दैट वुड श्योरली इम्पैक्ट द प्राइस गोइंग इनटू द फ्यूचर. आगे देखते हैं क्या बोलते हैं. For then my last question. What if Congress doesn't act on? I understand that the Commodity Future Trading Commission understand what you said about SEC. Does the Fed is the Fed directly involved in any of these regulatory actions regarding cryptocurrency absent Congress action? Just that what we regulate banks, regulate and supervise banks, and so we have a say in what our banks, that the Federal Reserve regulated banks and bank holding companies do with crypto assets on their balance sheets, what activities are permitted and that kind of thing. Does that of course, suggest, the OCC is at that table, and so is the FDIC. Does that suggest that a number of American banks are cautious because of your oversight of them on crypto? I mean, American banks are interested are now very much exploring, are there profitable opportunities to serve our customers in this new space? And of course, what we're doing is saying, let's be sure that takes place in a way that preserves and supports safety and soundness. And we've had a ongoing set of meetings and collaborations with the FDIC and the OCC. And that's ongoing, I guess, between us and the OCC. So I think that's an appropriate way to carry it forward. But it's not a substitute for what I think is it's not like it's like any other major area of innovation. Ultimately, Congress will come together to create a regulatory framework that is more fit for purpose for it, as it has in so many other cases. Okay, thank you, Mr. Chair Powell. Look forward to continue work. सो बेसिकली अगेन pretty much similar जो हमने पहले डिस्कस किया वही बोल रहे हैं. सो इट्स स्टिल नॉट क्लियर फॉर देम. फेडरल रिजर्व बेसिकली बैंक्स को देखता है. सो वो क्या बोल रहे हैं कि बैंक्स अपने क्रिप्टो एसेट्स के साथ या कस्टमर्स के क्रिप्टो एसेट के साथ क्या कर सकती है, दैट इज़ समथिंग दे कैन कंट्रोल. बट लेट्स सी, अभी भी उस पर कुछ ज़्यादा रेगुलेशन बनी नहीं है. सो कंट्रोल का मतलब ये भी है, इट्स अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव. हो सकता है बैन भी करते हैं, बट बैन इज़ अ वेरी एक्सट्रीम थिंग टू डू. सो आई डोंट थिंक जैसे भी डिस्कशन जा रही है बैन होगी. सो दैट इज़ लाइक अ वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ फेयर. सो विच इज़ आई डोंट थिंक विच इज़ लाइक नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ. बिकॉज अगर इस लेवल पर डिस्कशंस हो रही हैं हमारी, सो इट शुड बी कि हम उसको मेन स्ट्रीम थोड़ा लाएँ एंड आगे उसके साथ थोड़ा देखें कि कैसा रहता है क्रिप्टो के साथ, एंड क्रिप्टो एंड बैंक्स एंड फेडरल रिजर्व क्या उसके ऊपर रेगुलेशंस बनाती है, प्लस जो यूएस की कांग्रेस है वो उसके ऊपर क्या रेगुलेशंस बनाती है. सो दिस इज़ समथिंग दैट यूजुअली मूव्स द मार्केट, एंड इसके ऊपर रेगुलेशन आएंगे, ऑब्वियसली प्राइस मूव करेगा. अभी देख लेते हैं जल्दी से बिटकॉइन कैसा लग रहा है. डेली में VWAP is curving down, money flow is also almost about to curve down. Daily is looking bearish, RSIs are pointing downwards. एक जो bullish केस लग रहा है 2 day पे हमारी bullish divergence print हो रही है. Daily is bearish. Weekly देखते हैं, weekly पे again waiting for that money flow to come to almost -19, -20 to signal a bottom to us. 18 hour पे VWAP flat, zero line पे चिल कर रही है. यहाँ पे अगर आप देखें ऑलमोस्ट पैरेलल टू द जीरो लाइन, नॉट टेलिंग अस मच. आई गेस 16 आवर पे भी सेम ही है. 12 आवर पे वी आर प्रिंटिंग अ रेड डॉट. DBSI स्कोर इज एट 14. 8 आवर पे पोटेंशली एक ट्रिगर वेव हो सकती है. अगेन दिस इज लुकिंग 6 आवर पे एक पोटेंशियल ट्रिगर वेव हो सकती है. मनी फ्लो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स अगेन, प्रीटी मच सेइंग दैट लाइक इंडिकेटर ऑफ साइडवेज एक्शन. 4 आवर मनी फ्लो ऊपर पॉइंट कर रहा है, हमारी RSIs पॉइंट कर रही है ऊपर, VWAP ऊपर पॉइंट करी है. सो दिस इज़ लुकिंग बुलिश. हाउएवर अगर हम देखें हमारी RSIs बहुत ज़्यादा स्प्लिट है. अगर ये ऐसे स्प्लिट रहती है दैट मीन्स दिस ट्रेंड, ये जो ट्रेंड आएगा, ये जो ट्रेंड अभी चल रहा है अपवर्ड का, दैट इज़ वीक.
सो ये बहुत ही जल्दी ब्रेक होने वाला है. क्रिप्टो फेस ने भी अभी रिसेंट वीडियो में अपनी ये मेंशन किया था. सेम 2 आवर पे भी सेम ही लग रहा है. आई एम ओवरऑल स्टिल बेरिश. बुलिश एक्शन या साइडवेज एक्शन थोड़ा हमें मिल सकता है बेस्ड ऑन सम ऑफ द टाइम फ्रेम्स. बट जैसे ही अगर हम 30 मिनट पे भी देखें RSIs काफ़ी स्प्लिट हैं. एंड 15 मिनट पे तो शायद बेरिश डाइवर्जेंसेस भी फॉर्म हो रही हैं. या 15 मिनट पे बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है. प्राइस एक लोअर हाई बनाएगा यहाँ पे और मोमेंटम एक हायर हाई बना रहे हैं. सो दिस इज अ बेरिश डाइवर्जेंस. सो या मनी फ्लो इज कमिंग आउट. या 6 मिनट पे भी बेरिश डाइवर्जेंस है. 7 मिनट, 3 मिनट, 12 मिनट देखते हैं. या इट्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट. छोटे टाइम फ्रेम से मनी फ्लो का जनरल कर्वेचर अगर हम देखें, सो इट्स कमिंग डाउन. सो या दिस इज़ नॉट लुकिंग दैट ग्रेट. सो या ये आपके लिए आज था कि कैसे पॉवल के ने जो बोला कैसे हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं. एंड हमें उसके बारे में केयरफुल रहना होगा जब जैसे रेगुलेशन आती हैं. एंड फेवरेबल, नॉन फेवरेबल, वील सी. एंड आई कीप यू गाइज अपडेटेड. टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डू ज्वाइन द टेलीग्राम. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.